गतिविधियों में उसका उपयोग होता है। Yogi cracks the whip in UP. Halal certification under investigation. Halal, new communal flashpoint. That's our top focus on India First. The Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh has cracked the whip on the halal certification process, and it's banned the production, storage, distribution and sale of halal certified edible items. Now this ban comes into force with immediate effect. The government is probing what is being termed as a malicious attempt to discourage the use of products that lack halal certificate. The question is, are vested interests trying to seek unfair financial benefits as part of a planned strategy to market only halal products, to create disharmony in society and tear the social fabric apart? These are extremely grave charges that have been leveled. FIR has been registered at the Hazratganj police station. We'll get you much more on this big developing story. I'm Gaurav Sawant. As always, let's get started with the headlines. Glimmer of hope for 41 workers trapped in the Uttar Kashi tunnel. A 6-inch lifeline pipe reaches the workers. They will now be given solid food like khichdi and fruit. Civic apathy kills a mother and her daughter in Bengaluru. They were electrocuted by a live wire that was lying on the footpath. An FIR has been registered. Ugly dogfight in Telangana before elections. Chief Minister K. Chandrasekhar Rao calls Revant Reddy a barking dog. Reddy hits back, says father-son duo are mad dogs. Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim gets 8th parole for 21 days. The self-proclaimed godman is serving a sentence for raping 2 women. New video released by Israel shows Hamas terrorists wheeling hostages into the Al-Shifa hospital. A 50-meter tunnel shaft is also uncovered at the hospital premises. So this official notification by the Uttar Pradesh Food Safety and Drug Administration Department says halal certification of food products as a parallel system creates confusion regarding the quality of food items and is completely against the basic intention of the Food Safety and Standards Act. So who issues these halal certificates, especially for vegetarian food for consumption within India? How does one decide if vegetables are halal, if milk is halal, if honey and sugar are halal? There are several organizations, including the Jamiyat Ulema-e-Hind Halal Trust and Halal India Private Limited, that issue halal certificates. The question is, on what basis? Our Uttar Pradesh Bureau with our top story tonight. After ban on halal certified products in Uttar Pradesh, safety officials have raided several locations. From Lucknow to Kanpur, food safety officials examined various kinds of halal certified products being sold. ये हलाल प्रमाणीकरण का लेबल पर कहीं वो तो उल्लेख तो नहीं है। इस तरह के उल्लेख करके कुछ लोग बेच रहे हैं और जो कि हमारे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है, तो लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति आ जाती है कि कौन सा प्रमाणीकरण कैसे है सरकार। Yogi government in Uttar Pradesh has stopped the production, storage, distribution and sale of any food item with halal mark for domestic consumption. जब प्राइवेट संस्थाएं हैं और ये सर्टिफिकेशन जारी कर रही हैं तो ये देश हित में नहीं है। इसमें एक बड़ी संख्या की भावनाओं को आहत
करने वाला विषय है कि इससे जो धन अर्जित होता है उसका उपयोग कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में उसका उपयोग होता है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। यह सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। What is halal certification? Halal certification means that the product is legal for use by Muslims according to the beliefs of Islam. The basic ideology is to create a separate market for Islamic consumers. Who gives halal certificate? Although all private institutions in India do halal certification, but they come under the purview of 3 government institutions. These include Quality Council of India, National Accreditation Board for Certification Bodies, and Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. Institutions like Jamiyat Ulama-e-Hind Halal Trust, which issues halal certificate in India, claims that because of this, there is business worth $3.5 trillion in the world. डेवलपमेंट नहीं हो रहा है यूपी में, जो विकास नहीं हो रहा है, लाखों करोड़ का जो मीट एक्सपोर्ट है। मैं अगर निजी तौर पे कहूं तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि मीट एक्सपोर्ट ही बैन कर दो। आप बैन कर दीजिए, लाखों लाख करोड़ का जो धंधा चल रहा है भारत का उसको बंद करवा दीजिए। यही तो हम लोग आपसे चाहते हैं, बंद करवा दीजिए आज। But the UP government, which has banned halal products, says that these restrictions have been imposed because halal certification is valid only for export business of packaged meat. Halal certification of medicines and medical devices is also a punishable offence against the rules of the Drugs and Cosmetics Act 1940. The Uttar Pradesh police will now investigate whether agencies giving halal certificate follow any norms and whether funds generated by giving halal certificate are being misused. Bureau Report, India Today. So how does one issue a halal certificate for sugar, for example? Do they check how the sugarcane was cut, or halal honey? With meat products, there are certain norms that are followed. But for vegetables and fruit, and is there merit in the Yogi Adityanath government investigating whether this is a money-making racket by private bodies and probing how is this money actually being spent and where? Joining me on India First is Rakesh Tripathi, representing the Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh. Dr. Shoaib Jamai is the chairman of India Muslim Foundation. Amit Jamai represents the Samajwadi Party on this broadcast. And I want to begin by asking Dr. Shoaib Jamai, halal sugar, halal honey, how does one see if sugar is halal? Do they actually check how the sugarcane was cut? The Yogi Adityanath government, it's decided to ban all this halal certification for domestic use. How do you see this development, sir? First of all, Gaurav, this ban of halal certification and the food products or storage is absolutely ridiculous. And under the pretext of law, actually it's the appeasement politics for the majoritarian society. See, पहली बात तो हलाल समझे कि हलाल का मतलब बेसिकली वो होती है कि जिस प्रोडक्ट में कोई सुअर का मांस ना मिला रहे, और दूसरा कि अगर मीट है तो वो ऐसा प्रोसेस्ड हो जो इस्लामिक तरीके से है, जो ज्यादा क्लीन होता है, और हमारा मानना ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूवन। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होगा। ये हलाल जिसका नाम आपने लिया जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, उसी Okay, I'll try and reestablish that link with you. लेकिन आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि चीनी हलाल कैसे होती है। क्या देखा जाता है कि गन्ना हलाल हुआ था? चीनी को आप हलाल कैसे कर सकते हैं? आप मीट और मीट प्रोडक्ट्स पे कर सकते हैं, चीनी हलाल कैसे होती है? शहद हलाल कैसे होता है? लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आरोप यह लग रहा है कि 2024 के चुनावों से पहले सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए यह हलाल मुहर वाले सामान की बिक्री पर अंकुश लगाया गया है। इस आदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी?
गौरव, आपने जब एक रोचक सवाल जब पूछा कि चीनी हलाल कैसे होती है, क्या गन्ने के काटने में कलमा पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा गया है, या उसको जिबह नहीं किया गया है, शायद इससे हलाल का कोई लेना देना है, मुझे लगा था बड़ा रोचक सवाल है और इसका कोई रोचक उत्तर शोएब जमाई देंगे, लेकिन उन्होंने उत्तर देने से परहेज किया। देखिए, सच ये है कि सरकार के पास किसी प्रकार की अगर कोई शिकायत आती है तो सरकार उसका परीक्षण करती है। पिछले दिनों में लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि कुछ एनजीओ, कुछ इस प्रकार के संस्थाओं के द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन के लिए तमाम कंपनियों को बाध्य किया जा रहा है और हलाल सर्टिफिकेट देने के नाम पर एक बड़ी संख्या में पैसे की उगाही हो रही है। मसलन एक प्रोडक्ट के लिए 60,000 रुपए प्रति वर्ष इस प्रकार से सर्टिफिकेशन के लिए उगाही की जा रही है और बिना किसी लैब टेस्टिंग के, बिना किसी तंत्र का, किसी मानक का पालन किए हुए हलाल सर्टिफिकेशन केवल पैसे लेकर के दिए जा रहे हैं। और इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, हलाल सर्टिफाइड उत्पाद नहीं होगा तो इसको फला फला मजहब के लोग, फला खास समुदाय के लोग इसको नहीं खरीदेंगे। इससे मार्केट में तमाम उत्पादकों पर इस बात का दबाव था कि वो इस हलाल सर्टिफिकेट को परचेज करें, इस हलाल के ठप्पे को स्वीकार करें। यह मिथ्या छाप है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 स्पष्ट तौर पर उल्लिखित करता है कि केवल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI केवल वही इसका नोटिफिकेशन करने का काम कर सकती है, केवल वही अपनी लैब टेस्टिंग करके इसको प्रमाणित करने का काम कर सकती है। तो आप अनफेयर प्रैक्टिसेस का आरोप लगा रहे हैं। लेट मी बिगिन डॉक्टर शोएब जमाई वंस अगेन। डॉक्टर जमाई, आपका ऑडियो उस समय बंद हो गया था, तो ये प्रश्न मैं जानना चाहता था कि ठीक है, मटन में, चिकन में, इसमें समझ आता है कि एक प्रक्रिया है जिसका इस्लाम धर्म को मानने वाले उसका पालन करते हैं। चीनी में कैसे होता है? आप क्या देखते हैं कि जैसा डॉक्टर राकेश त्रिपाठी भी पूछ रहे थे, राकेश त्रिपाठी भी जैसा पूछ रहे थे कि कलमा पढ़ा गया या गन्ने को हलाल किया गया या झटके से ही काटी गई, चीनी कैसे हलाल होती है? नहीं, देखिए, चीनी के बारे में आप लोग को पता है कि उसको व्हाइट करने के लिए जो है ना, बोन्स का इस्तेमाल करते हैं, हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है, वो एनिमल बोन्स होते हैं। सल्फर सुना था, हड्डियों का इस्तेमाल भी होता है चीनी की सफेद है। बिल्कुल झूठ है। आप नेशनल टीवी ब्रॉडकास्ट पर बैठ करके इस प्रकार से झूठ मत फैलाइए। ये शोएब जमाई जानबूझ करके झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। चीनी जिसका प्रयोग व्रत में करते हैं, फलाहार में करते हैं, उस चीनी को आप कह रहे हैं कि वो जानवर की हड्डी से साफ किया जाता है। अरे पढ़ लिख कराइए जनाब। चीनी सल्फर से साफ की जाती है, चीनी चूने से साफ की जाती है, सल्फर का उपयोग होता है। आपने कहां देखा है चीनी को सफेद करने में हड्डी का इस्तेमाल? डॉक्टर शोएब जमाई, कहां देखा आपने ये? हाँ, अरे ये मदरसे से पढ़कर आए हैं, इनको जानकारी नहीं है। आप सर्च कीजिए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। और शहद में, शहद भी हलाल होना चाहिए। शहद में भी हड्डी का इस्तेमाल होता है? नहीं, मेरा एक सवाल है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मुझे पूछने दीजिए गौरव फूलों को। अगर आपकी अनुमति हो तो सवाल आज मैं पूछ रहा हूं। लेट मी ब्रिंग इन अमिक जमाई ऑल्सो इनटू दिस कॉन्वर्सेशन। अमिक जमाई, chicken, meat, I can understand. You know, if it's mutton, if it's chicken, if it's animals, Islam has a certain way that has been, said for followers of Islam. But I fail to understand how does it impact sugar or honey or clothes for that matter. Halal clothes, certification for clothes. Now, is there merit in the complainant saying all of this is to create unfair trade practices and ensure that only halal certified items are sold in the market in India? Yes, for foreign countries it is a norm. For Middle Eastern countries, yes. But why for India? गौरव भाई, देखिए, इशू सिर्फ ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत शरीफ इंसान है। वो बिजनेस के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बारे में जानते नहीं। 52 देशों में हमारा जो मीट एक्सपोर्ट होता है, नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड हिंदुत्व की सरकार में 1.25 लाख करोड़ का बिजनेस आज मीट एक्सपोर्ट का है। दुनिया में भारत दूसरे नंबर पे है। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, योगी जी ने कहा एक्सपोर्ट पे नहीं है, इंपोर्ट पे है। लेकिन जब आप 2 देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ चीजें आप मंगाते हैं, कुछ चीजें आप भेजते हैं। तो सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, नौकरियों के लिए उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। इन विषयों को ना एड्रेस करके
क्या जरूरत पड़ गई? अगर हम ये कह रहे हैं जमीयत उलमा हिंद जो ये काम करती है, फ्रीडम स्ट्रगल में उसका बहुत बड़ा नाम रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में 1.25 लाख करोड़ का बिजनेस अगर चल रहा है, तो हम तो कह रहे हैं ये हलाल काम था। आप उनको तो आपको भारत रत्न देना चाहिए था अरशद मदनी साहब को, कि आपकी वजह से इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। तो ये सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए। अब बाबा रामदेव जी, अभी सुनिए आप गौरव भाई, एक सेकंड। नहीं, मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका, बोलिए ना सर। हम इंडिया फर्स्ट पर इंडिया फर्स्ट है, हम किसी को रोकते नहीं है। नहीं, आज राकेश भाई से बोलिए, पतंजलि के जितने प्रोडक्ट हैं हलाल सर्टिफाइड हैं, नेस्ले, अमूल हलाल सर्टिफाइड। कहिए रामदेव के खिलाफ ही एफआईआर करें आज, पतंजलि के खिलाफ। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अरब दुनिया में जा रहे हैं, या हबीबी अहलन वसहलन कह के उनका वेलकम हो रहा है, गले मिल रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी की इमेज दुनिया में बदनाम हो रही है। तो कौन सा ब्यूरोक्रेसी है? विदेशों का नियम अलग, भारत का नियम अलग, या फिर आप भारत को भी अरब देशों के ही नियमों से चलाना चाहते हैं? लेकिन खैर, राकेश त्रिपाठी जी उत्तर दीजिए। भारत के मुसलमान का बिलीफ अलग थोड़ी है। राकेश जी जवाब दीजिए। सर, नहीं तो मुसलमानों की बिलीफ हिंदुओं पर क्यों डाली जा रही है? फिर मुसलमानों की बिलीफ है तो क्या पूरे देश पर लागू हो जाएगी? देखिए, मुझे राकेश त्रिपाठी जी उत्तर दीजिए। देखिए गौरव, सच ये है कि समाजवादी पार्टी के लोग सरकार के आदेशों का अध्ययन नहीं करते हैं। अगर सरकार के आदेश को उन्होंने पढ़ा होता तो ये बात स्पष्ट तौर पर समझ जाते कि निर्यात किए जाने वाले किसी प्रोडक्ट्स पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है, उसको बैन नहीं किया गया है। अरब देशों में जो जाना है उस पर जिस प्रकार की छाप की आवश्यकता है विदेशी प्रोडक्ट्स के लिए, उनको निश्चित तौर पर उस तरह की छाप लगा करके ले जाइए। वो जमीयत उलेमा हिंद से आप जाकर के आप सर्टिफाई कराइए, या जामा मस्जिद के इमाम से आप जाकर सर्टिफाई कराइए, आप बिल्कुल कराइए, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन भारत के भीतर भारतीय हिंदुओं को उन्हें कोई उनको अपनी बात कहने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगा। दोनों एक साथ बोलेंगे तो दोनों की ही बात दर्शक नहीं सुन पाएंगे। One person at a time is my request. Okay, Rakesh Tripathi, complete your point, then I'll come to Mr. Jamai. Complete your point, sir. देखिए, नवरात्रि के दिनों में व्रत के दिनों में फलाहार के तौर पर शहद का उपयोग, चीनी का उपयोग, चाय पत्ती का उपयोग फलाहार में किया जाता है, व्रतों में किया जाता है। और ऐसे में अगर उस पर हलाल सर्टिफाई किया होता है, निश्चित तौर पर लोगों की भावनाएं आहत होती है। हलाल करने को मुझे लगता है आपके देख रहे दर्शक वैसे ठीक ढंग से जानते होंगे कि जब जानवर को जिबह किया जाता है, यानी उसको तड़पा कर जब मारा जाता है और कलमा साथ में पढ़ा जाता है, एक इस्लामिक रिचुअल्स उसके साथ में अपनाए जाते हैं, इस प्रक्रिया के बाद उसको हलाल कहते हैं। और यह प्रक्रिया आप हिंदुओं के वेजिटेरियन फूड्स पर, आप उनके फलाहार पर अगर हलाल सर्टिफाई करते हैं तो निश्चित तौर पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। और मैं फिर कह रहा हूं, यह उत्पाद का मजहबीकरण है, यह बाजार का वर्गीकरण है। आप बाजार को डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बाजार में इस प्रकार से उत्पाद पर आप मजहब की छाप लगाने लगेंगे तो आप नहीं जानते हैं कि इसके परिणाम आगे तक कहां तक जाने वाले हैं। डॉक्टर शोएब जमाई, सनातन की छाप होगी, फिर सनातन में भी अगड़े और पिछड़े की छाप होगी, दलित और आदिवासी की छाप लगने लगेगी। ओके, डॉक्टर शोएब जमाई एंड देन अमित जमाई। अगर देखिए गौरव भाई, बतौर मुसलमान मैं आज कहना चाहता हूं, अच्छा ठीक है, बात बताइए। अमित जमाई वांट्स टू कम इन फर्स्ट। अमित भाई गो अहेड। धंधा है बंद करवा दीजिए। भारत के मुसलमान चाहते हैं 1.25 लाख करोड़ का जो इनकम हो रहा है बंद कराइए। और ये जो 20 टॉप जो ये एक्सपोर्टर है, जो स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, 18 उसमें जैन है, मुसलमान नहीं है। कौन लोग है ये? और ये आपका संगीत सोम स्लॉटर हाउस चलाते हैं, उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। थोड़ा समझाइए अपने लोगों को। जवाब क्या दे रहे हैं? कौन मीट पर बात कर रहा है? अरे चीनी पर बताइए, कपड़े पर बताइए, चाय पत्ती पर बताइए, टूथपेस्ट पर बताइए। आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर आप हलाल सर्टिफिकेशन के लिए आप मीट की बार बार चर्चा कर रहे हैं। अरे मीट पर हलाल हराम जो लगाना है वो लगाइए, खाइए मीट आपको जैसे खाना है। लेकिन आप चीनी पर, आप चाय पत्ती पर, आप दूध पर, आप डेयरी प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफाई करने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर यह बैन किया जाएगा। आप समझ लीजिए, ना हलाल ना हलाला और ना हवाला, ये नहीं चलेगा। Let me bring in Shoaib Jamai. Only Shoaib Jamai. Both the others, just hold on, gentlemen. Shoaib Jamai, the government is investigating if this halal certification, if it's given in the correct form, is it given in an illegal way, whether there are any norms that are followed in giving these certifications or only money is being taken, and whether this is leading to
creating communal disharmony in the country. Why is the government action wrong in your view, sir? देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मीट के मामले में तो बहुत क्लियर कट है कि हराम और हलाल क्या होता है, लेकिन एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें कई जगह हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए यूज करते हैं कि वो इस बात का प्रमाण है कि उस चीज में कोई ऐसी अनवांटेड नॉन वेजिटेरियन या मतलब जैसे गौमूत्र होता है वो नहीं मिला होता। इसी वजह से पतंजलि को भी हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ा कि हम ऐसे प्रोडक्ट को उस रहित जो है हम गल्फ में भेजें। अब सवाल ये उठता है कि आप भारत के देखिए, मुसलमान गल्फ और का यूएई नियम के है तो मुसलमान इसका या सऊदी पालन के हो रहा है। मुसलमान का भारत में बिलीफ ये नियम सिस्टम नहीं अलग है तो नहीं तो यहां जबरदस्ती क्यों लागू करवाने का प्रयास हो रहा है? गल्फ का नियम है, वहां पालन हो रहा है, यहां तो वो नियम नहीं है। एक आखिरी पॉइंट मेरा ले लीजिएगा जी डॉक्टर शोएब जमाई। ठीक, एक मिनट में आपका ऑडियो पर फिक्स करता हूं। अमित जमाई, आप उत्तर देना चाह रहे थे। राकेश त्रिपाठी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में एक फूड चेन है बरकास के नाम से। तो आजकल वो मेरा आपसे जो प्रश्न है आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। भारत में हलाल प्रोडक्ट्स का नियम नहीं है शाकाहारी खाने पर जो दुकानों में बेचा जाए, तो यह क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है? पहली बात। दूसरी बात, अगर इस पर अंकुश लगाया जा रहा है, मैं वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं आम दुकानों पर बिकने वाले सामान की बात कर रहा हूं, मैं मीट चिकन की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसमें गलत क्या है? अमित जमाई। देखिए, मेरा इतना कहना है कि अगर हलाल सर्टिफाइड करने से हमारा यूपी का प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट अगर है दुनिया में हजारों करोड़ में जा रहा है, ये तो फायदे की बात है। दुनिया में जा रहा है, आप समझ नहीं रहे। मैं भारत के बाजार की बात कर रहा हूं, यहां पर क्यों थोपा जा रहा है? अरे एक्सपोर्ट पर बात ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, कोई भी हमारा हिंदू भाई ये नहीं चाहेगा कि उनके किसी प्रोडक्ट में पता चले कि उसमें पोर्क यूज हो, शराब यूज हो। बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं। अब मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूं। एक बरकास करके यूपी में चेन है जो अरबियन फूड, मैं फर्स्ट टाइम जब गया, एक इंडिविजुअल कंपनी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इंडिविजुअल कंपनीज बिकॉज़ आई हैव नो बडी फ्रॉम दैट कंपनी टू गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यू. I will refrain. I will request you to refrain. We are staying on the UP government order, sir. I do not know about that company, and I would request you not to get into individual cases. However, Rakesh Tripathi, why such stringent actions and sections of the law which actually talk about Section 153A, promoting enmity between groups. Section 298, uttering words with intent to hurt religious feelings. 384, extortion. 420, cheating. 467, forgery. Why these charges against halal certification? Rakesh Tripathi. देखिए, मैं अलग अलग धाराओं को आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं। हलाल सर्टिफिकेट करने के लिए किसी प्रकार की भारत सरकार के द्वारा कोई अधिकृत संस्था नहीं है, इसलिए इस प्रकार का कोई भी छाप करना, ये सर्टिफिकेट करना, मुहर लगाना, ये मिथ्या छाप की परिभाषा में आता है। और मिथ्या छाप खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा दंडनीय है, और इसलिए इस प्रकार की मिथ्या छाप क्रिएट करना निश्चित तौर पर यह 420, 467, 468 अंतर्गत धारा आता है, जालसाजी और फ्रॉड के मामले में आता है। 153A और 295 इसलिए लगती है क्योंकि अगर आप किसी को बाध्य करते हैं इस आधार पर, किसी उत्पादक को, मैन्युफैक्चरर को, कि अगर आप हलाल की छाप नहीं लगाएंगे तो एक खास तबके के लोग आपके इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे और मजबूरी में आकर के उसको इस प्रकार की छाप आपसे खरीदनी पड़ती है, तो निश्चित तौर पर एक एक्सटॉर्शन का केस है। ये आप किसी हिंदू को उसके फलाहार में very emotive issue, and we are still waiting for more details. Where is the illegality? Where is creating communal disharmony? And can this actually lead to trouble in our society? We will track the story very, very closely. For joining me here on India First, many thanks. Coming up next is Election Unlocked with Rajdeep Sardesai on the campaign trail with the princess is our top story. Stay with us. You are watching India Today.
Powered by Finest, Be Sustainable Change, a B&P Group company. Get ready for an immersive journey into the heart of news, politics and insights that matter. Join India Today now on WhatsApp with the #1 election team as we gear up for the upcoming assembly elections. Do scan the QR code. Join India Today now on WhatsApp. Follow these steps. Open WhatsApp on your phone. Check for a new updates tab. Select Find Channel and type India Today. After finding the channel, tap the Follow button. State of war, Telangana heats up. This time, remember, with the head of the elections right now, it's Takkar in Telangana that's coming in. A day after launching the manifesto for the mega Telangana Takkar, the Saffron clan is trailing guns at the ruling BRS. During a roadshow in Narayanpet, Bharatiya Janata Party Chief JP Nadda tore into Chief Minister Kejriwal and took the Parivarvad jibe. Nadda said, BJP is against dynastic parties and will wipe out all the dynastic parties in the country. He further added that the ruling BRS is immersed deep in corruption. BJP chief has accused Chief Minister KCR of planning to take away even the temple lands now. Here's what and how the Bharatiya Janata Party is charging at the ruling BRS in Telangana. So remember, for the Bharatiya Janata Party, it's very important that they make a presence in a South Indian state, and that's Telangana that they're aiming at. For the BRS, it's literally political survival, because that is where in Telangana they are strong in. Congress, of course, wants to ensure that after Karnataka, they get Telangana too. So it's high stakes for each party. Joining me now, Abdul Bashir for the latest on that. Abdul, clearly, the Bharatiya Janata Party ensuring all guns are there, the big leaders are there in Telangana to charge at the BRS. What are the issues that the BJP is using to charge at Chief Minister KCR, and how have the responses been from the BRS? Well, as we see that BJP's top guns are now touring Telangana recently, Union Home Minister Amit Shah had released a manifesto. And then yesterday, BJP National President JP Nadda was here in Telangana, where he has held rallies. So here he has accused the KCR of corruption and appeasement politics. JP Nadda had said that K. Chandrasekhar Rao is very corrupt, and he said that Kaleshwaram irrigation project served as an ATM for the same. Nadda also accused KCR of indulging in appeasement politics for the sake of votes, and said the BRS chief made Urdu as the second official language and proposed to increase the reservation of particular community to 12% from the current 4% is what he mentioned. You are watching India Today, powered by Finest, Be Sustainable Change, a B&P Group company. Co-presented by आपका जॉय भारत का जॉय ई-बाइक. Co-powered by पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. Hello and welcome. You're with Election Unlocked, the show that unlocks all that's happening on the election campaign trail in this big winter election of 2023. Our top focus is Rajasthan, which goes to the polls this week. The headlines. Poll campaign reaches fever pitch in Rajasthan. All top guns blazing for both the two major national parties, BJP and Congress, hitting the campaign trail in Rajasthan. Prime Minister Modi attacks the Congress in his Bikaner rally and roadshow, claims that the Congress has an anti-woman attitude. It's been called the ugly dogfight in Telangana before polls. Chief Minister K. Chandrasekhar Rao calls Revanth Reddy a barking dog. Reddy hits back, says the father-son duo in charge of Telangana are mad dogs. But our top story on Election Unlocked, all
top guns across political parties this week concentrating on Rajasthan. The state goes to the polls on Saturday, and every major national political party leader is hitting the road in Rajasthan. Prime Minister Narendra Modi in a roadshow in Bikaner, slamming the Congress's what he described as anti-women attitude. In Ajmer, campaigning for the Congress, Priyanka Gandhi Vadra reminding people of the rising pitch of divisive politics and saying that caste and religion was the core of the BJP and that was dividing people there. BJP President JP Nadda targeting Ashok Gehlot's government and saying that the fight with Sachin Pilot for the post of Chief Minister had cost the state with good governance. Union Home Minister Amit Shah also in the state holding road shows and rallies attacking the Congress government, calling it an ATM for the Congress party. The poll campaign in Rajasthan ends in just a couple of more days and therefore has become the top focus for all the parties. The Congress government is hoping to break what is called Rajasthan's 5-year itch, where governments change hands every 5 years. Now, one big question that is being asked in Rajasthan is who becomes the Chief Minister if the BJP wins the election. Remember, Vasundhara Raje is a two-time Chief Minister. She is contesting the election from her bastion of Jalrapatan, but the fact is she has not been projected this time as Chief Ministerial candidate. The BJP talking of collective leadership. Among the names being whispered on the streets of Rajasthan is that of the BJP MP who is now the candidate in a Jaipur constituency, Diya Kumari, from the royal family of Jaipur. Some say she could be a possible alternative that the BJP is looking at, a younger leader to replace the old guard. I caught up with Diya Kumari on her campaign trail and asked her about her political ambitions and her politics and where the BJP saw Vasundhara Raje's future. Listen in to Diya Kumari, a potential face of the BJP in Rajasthan. Hi ma'am, how are you? Okay, I have to ask you this. Lot of speculation ever since you've been contesting from here. MP coming for an MLA seat. What's the message being sent out by the BJP here? I really don't think there's any message. It is just that I think the party decides where they want to make somebody fight from. I was an MLA, then I fought MP, and now again MLA. So I think that's something the party takes a decision at their level, and that's what happened. There's no planning in this. I'll tell you why. Because the belief is a Maharani is being replaced by a Rajkumari. Vasundhara Raje is the old order. Diya Kumari may well be the new order of Rajasthan. I really don't believe all Chief this. Minister? See, you heard that? Yes. सुनने दो शांति हाँ बताइए हाँ नहीं that's not true. I think that's just speculations. People love to make up these stories. It sounds very nice, but I don't think there's any truth to any of this. And also again, this is a decision. Whoever will become the Chief Minister will be decided at the level of the parliamentary board and our top leadership. No, but why should I be speculating or anybody be speculating? No, because this time it's clear Vasundhara Raje is not being projected like she was in 2018 or in previous election. That's why it's an open race. कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये सवाल तो उठेगा मैम. वो उठ सकता है, लेकिन the thing is that I'm not focusing on that. I'm focusing on winning this election. Each election is, very different. This is different. So we have to just focus on that task given at hand. Not think too much about the future. That they will decide. Whoever will become will be good for the state. But why a safe seat then for an MP? It almost seems as if the BJP. Why is the BJP sending MPs to contest a state election? What is the messaging? What were you told by your party leadership? Nothing was told, only that they decided that they told me
that we've decided that you fight from Vidyadhar Nagar. Please be ready and prepared. I was told this the night before my name was declared. Before that, I had no idea. You know, the other day I saw a video of yours where you are challenging virtually Priyanka Gandhi Vadra and saying, what about women's safety in Rajasthan? She says we are doing a lot for the Mahila voters. Ashok Gehlot's government ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है. How can, you know, the BJP should answer what are they doing for women? BJP's manifesto clearly says they will have Mahila Thanas, they will have gush, they'll have security for women, they'll have CCTV cameras. BJP is always focused on women welfare. All the schemes are also focused on women. Gehlot talks about women welfare. Well, he's only promised to give them mobile phones. Women don't want mobile phones, they want security. That is the first thing that the government should be providing to their citizens and especially to women. You don't agree that the BJP this time is a divided house. BJP बिखरी हुई है. प्रियंका गांधी के शब्द मुझे थे कि कांग्रेस इस बार एकजुट